आज आगत होईछि अंतरीण बजेट एवं एई बजेट आगत करिसेंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। तेबे एथिरे बहुत गुड़िए गुरुत्व दिया जाइछि बहुत गुड़िए क्षेत्र को। पीएम आवास योजना रे 3 कोटी लाभवान हेबे। पीएम ग्राम्य गृह योजना रे 2 कोटी घर तैयारी हेबो। मिडिल क्लास को पई आवास योजना आरंभ हेबो। गरीबों को पक्का घर जोगाई दिया जाउछि बोली निर्मला सीतारमण कहिसेंती। 5 वर्ष रे आ 2 कोटी पक्का घर जोगाई दिया जिवो। 1 कोटी घर को 300 यूनिट मागणा बिजुली जोगाण हेबो। 1 कोटी घर को रूफटॉप सोलार व्यवस्था करा जिवो। या द्वारा प्रति घर को प्रति मास 300 यूनिट बिजुली मिली पारिबो। अन्य पक्षरे आयकर सीमा मध्य अपरिवर्तित रहितबा कथा सूचना मिली। गत थर आयकर स्लैब एथर भी लागू होईछि। डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट टैक्स अपरिवर्तित रहिछि। कर व्यवस्था रे कोनोसी परिवर्तन होइनी। बजेट उपस्थापन में अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एने घोषणा करिसेंती। टैक्स रिटर्न फाइल सहज एवं सरल करा जिवो। 2025 वित्तीय वर्ष रे कर रे कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही। 2025 पर्यंत सवरेन फंड उपरे कर रिहाती सीमा बढ़ा जाइछि। स्टार्टअप पई कर रिहाती परिधि बढ़ा गला। पुराना कर विवाद प्रत्याहार करा गला। वित्तीय वर्ष 2010 रु 15 मध्य थिबा विवाद प्रत्याहार करा जाइछि। एहा द्वारा 1 कोटी करदाता लाभवान होई पारिबे। अंतरीण बजेट आज आगत होईछि एवं बजेट को नहीं प्रत्येक वर्गर लोकंकर किछि ना किछि उत्कंठा रहितला। विशेष करी आयकर स्लैब रे किछि परिवर्तन हेबा नहीं आशा करुथिले समस्ते। मध्यवित्त लोकन को केते मात्रा रे संतुष्ट करि पारिबो ए बजेट ता ऊपर मध्य नजर रहितिला। तबे 2047 सुद्धा विकसित भारतर लक्ष्य रखा जाइछि। 1 कोटी घर को रूफटॉप सोलार व्यवस्था करा जाइछि एवं ता सहित एहा द्वारा प्रति घर को प्रति मास 300 यूनिट बिजुली मध्य मिली पारिबो। एवं पीएम आवास योजना रे 3 कोटी लोक लाभवान होई पारिबे। सुविधा पाई पारिबे पीएम आवास योजना रो। एवं अन्य पक्षरे देखिबा गले पीएम ग्राम्य गृह योजना रे 2 कोटी घर तैयारी करा जिवो। मिडिल क्लास को पई आवास योजना आरंभ करा जिवो एवं केमिति कोन लोक माने सुविधा रे आवास योजना द्वारा उपकृत होई पारिबे ता ऊपर बध नजर रखा जाइछि। अंगनवाड़ी केंद्र को अपग्रेड करा जिवो। आशा कर्मी को आयुष्मान भारत रे मध्य शामिल करा जिवो। 9 ରୁ 14 वर्षर झीओंकर टीकाकरण मध्य करा जिबा नै की व्यवस्था रखा जाउछि। एथर बजेट रे सबु क्षेत्र को गुरुत्व दिया जाउछि। झीओं को सर्वाइकल कैंसर निरोध टीका मध्य दिया जिवो। PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and muft bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister 2021-22 and that we are well on track to meet the 4.5% fiscal deficit on or below 4.5 even by FY26. If this is the background with which I'm talking and the presentation of the budget happened, I want to very clearly put some things under the heading, if you want to call it that, Disha Nirdeshak Baatein. You must have heard the Honorable Prime Minister speak before the Parliament session, well before the sessions commenced. His usual customary remarks. He said the budget will be presented tomorrow and you will have some Disha Nirdeshak Baatein in it. So, what are those Disha Nirdeshak Baatein? There are about 5 of them I highlight. Social justice as effective and necessary governance model. So it's not just a slogan for us, social justice, we'll have to work for Nyay. No. We've shown you that it is a governance model and a successful one at that. So social justice as an effective and governance, necessarily a governance model.
Then 4 major caste groups, as we call it, as Prime Minister has emphasized: the poor, the women, the youth, and the annadata. So, Disha Nirdeshak Baatein, you have the second point. Third, focus on infrastructure. This year again, massive increases of capex happened in the last 4 years. This year too, there is 11% increase, resulting in a very recallable number, 11,111 crores. So continuing the trend of the last 4 years, where capital expenditure has been the route, one for revival earlier from COVID, and now for sustained growth towards towards the Vikasit Bharat goal. Fourth is the using of technology as a huge opportunity. DPI as almost a new factor of production. So it is actually bringing in the value addition to the economy. It is facilitating every sector to bring in the value addition which is so required and improves on our productivity. And the last Disha Nirdeshak Baatein is high-powered committee for extensive consideration of challenges arising from population growth and demographic challenges. So if these are Disha Nirdeshak Baatein, what were the major announcements? I'll recall very quickly 12 of them. I'm not spending any time except for reading out what those 12 are. 2 crore more homes under the PM Awas Yojana. We already completed nearly the 3 crore. Housing for middle class. Rooftop solar for at least 300 units of power generation every month, which will be muft bijli for the households. There will be some assistance and some kind of a funding which will be extended. So you're generating renewable energy, providing the renewable energy generators the free that which will they कोर्ट को निर्देश पर ज्ञानवापी मंदिर रे आरंभ हला पूजार्चना कड़ा सुरक्षा मध्य भोर